وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Inshallah, we begin from verse number 45 of Surah Nahl. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Afa amina alladhina makaru sayyiati an yaksifa Allahu bihimul arza aw yatiyahumul azabu min haythu la yash'urun. أو يأخذهم في تخلبهم فما هم بموجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Do then feel secure those who plot evil, that not will cause to swallow Allah into the earth. Do then feel secure those who plot evil, that not will cause Allah to swallow them up into the earth, or not will come to them the punishment from where not they perceived, or yakhuzahum fi takhallubihim, or seize them in their movements, famahum bimujizin, that not they will be able to escape, or he would seize them gradually through fear, gradually in bracket, or he would seize them gradually through fear. That verily your Lord surely is Raufur Rahim, most kind, most merciful. क्या फिर बेखौफ हो गए वो लोग जो मकर करते हैं बुरा, कि नहीं धसाएगा अल्लाह उनको जमीन में, या नहीं आएगा उन पर अजाब जहां से वो नहीं शऊर भी रखते या वहम और गुमान भी रखते, या पकड़ ले उनको उनके चलत फिरत में, फिर वो नहीं अल्लाह को आजिज कर सकते, या पकड़ ले उनको बेतदरीज खौफ के जरिए। बेशक आपका रब जरूर बहुत ही शफकत फरमाता है और बहुत ही रहम फरमाता है, या बहुत ही शफकत फरमाने वाला या रहम फरमाने वाला। We are at the end of the day human beings. Shaitan is always there. Our nafs is always there. These two together bring about temptations to man to commit evil. But a true believer always would fear Allah and put in his or her best efforts to stay away from evil. But on certain extraordinary circumstances, there is a possibility that as human beings, we commit evil as well. But what are we supposed to do? We are supposed to immediately accept the mistake, turn towards Allah and seek pardon and forgiveness from Him. This is what is expected. एक मोमिन जो होता है वो हतन कोशिश करता है बुराइयों से बचने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे हालात कभी हो जाते हैं कि वो गलती कर बैठता है, तो उस पर जो है वो गलती का एतराफ करता है, फिर फौरन अल्लाह की तरफ तौबा करते हुए रुजू कर लेता है, और इसी में उसके लिए खैर है। But there are certain people who commit mistakes and they feel nothing is going to go wrong. We are most vulnerable to committing mistakes, there's no doubt about it. But persisting, अड़े रहते हैं अपने गुनाह करते हुए और बार बार जो है गुनाह करते हैं, ये इस बात को समझते हुए कि कुछ होने वाला नहीं, it's not going to happen. So Allah is asking, are these people feeling secure that Allah will not punish them? Either He sees them in their moments when they move about up and down, all of a sudden the azab will come, or Allah subhanahu wa ta'ala will seize them gradually and destroy them through fear. All these are the punishments of Allah. Or Allah subhanahu wa ta'ala can cause the earth to split and bury them inside. Anything can happen. Allah says, don't become fearless.
And don't think you will go scot free. तुम ये मत समझो कि तुम कुछ भी गुनाह कर सकते हैं और कुछ होने वाला नहीं, ये नहीं होगा। कहीं ना कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें पकड़ लेगा और फिर उसके बाद जो है तुम उस अजाब में, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। अवलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनि वश्शमाइलि सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून वलिल्लाहि यस्जुदु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ वलिल्लाहि यस्जुदु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु व हुम ला यस्तकबिरून यख़ाफ़ूना रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम व यफ़अलूना मा यु'मरून. Kindly do a symbolic sajda now, and after the class you can do the regular sajda. Do they not see towards what has created Allah of the things? Yatafayyau zilaluhu anil yamin. Incline its shadows to the right, was shamaili, and to the left. Sujjada lillah, prostrating before Allah, wahum dakhirun, while they are humble. And to Allah only prostrates whatever in the heavens and whatever in the earth of the dabba, moving creatures, and also the angels, wahum la yastakbirun, and they not are arrogant. They fear their Lord from above them, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, and they do what they have been commanded. क्या नहीं वो देखते उन चीजों की तरफ जो अल्लाह ने पैदा किया, झुकते हैं उसके साए दाएं और बाएं, सिजदा करते हुए अल्लाह को, और वो आजिजी अख्तियार करते हैं और अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में, जानदारों में से और फरिश्ते भी, और वो नहीं तकब्बुर करते। यखाफूना रब्बहुम मिन फौक़िहिम, वो खौफ करते हैं अपने रब से जो उनके ऊपर है, और वो करते हैं जो कुछ उन्हें हुक्म दिया गया है। जो कुछ आसमान और जमीन में पूरी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सजदा है। सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे सिजदा कर रहे हैं और पूरी आजिज़ी अख्तियार करते हैं। काश इंसान भी दिल से अल्लाह को सिजदा करे उस यकीनी कैफियत के साथ, तो कितना अच्छा होता। अल्लाह ने इंसान को आजादी दी कि वो अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम कर दे, सजदा करे, या फिर जो है इनकार करे। लेकिन मोमिन इस आजादी को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले करके सरेंडर हो जाता है और फरमाता है अल्लाह से, ये आजादी जो तू मुझे दिया है अल्लाह, नाफरमानी करने की, ये आजादी भी मैं अब तेरे हवाले कर देता हूँ। अब बस इताअत के सिवा और मैं कुछ करने वाला नहीं, और मैं तेरी ही बंदगी करूंगा, तेरे आगे ही सिजदा करूंगा और तेरी तमाम अहकामात पर अमल करूंगा पूरे इखलास के साथ, तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए, ताकि मुझे दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल हो जाए तेरे जरिए। खलास। A true believer prostrates before Allah subhanahu wa ta'ala, and prostrates only before Allah. Just as how the rest of the creation is also prostrating to Allah, the sun, the moon, the oceans, the rivers, the animals, the moving creatures, the birds, the trees, to the extent that even our human bodies are prostrating before Allah. Even our physical bodies are prostrating before Allah. If only man would consciously prostrate before Allah alone, as are doing the rest of the creatures, success is guaranteed for him. Success is guaranteed for him. So many disregard this. They reject Allah and do not prostrate before him. But a true believer gives a commitment to Allah and says, "O Allah, this liberty which you have given to obey or disobey, today, after having consciously accepted Islam, I now surrender to you this liberty to disobey, and now I am going to only obey you and follow your commandments. For I know pretty well that by doing this, you will be pleased with me, and this will guarantee my success in this world and the hereafter." ये आज़ादी भी जो अल्लाह ने हमको दी है ना, नाफरमानी करने की, इनकार करने की आज़ादी भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले करते हुए जस्ट सरेंडर बिफोर
We say, no, we don't possess it anymore. We don't want it anymore. Though we have the liberty, but we are not going to take advantage of it. On the contrary, we surrender it to you. So Allah subhanahu wa ta'ala says that this kind of a behavior and this kind of a way of practicing Islam, that is the best, without showing any element of arrogance. And they always fear for Allah subhanahu wa ta'ala. And even the angels also prostrate before Allah and they fulfill Allah's commandment. And that is what even we need to do. Those responsibilities that we have, both to fulfill the rights of Allah and to fulfill the rights of human beings. And if we are going to do justice to them, agar hum iska haq ada kare, to dunya aur akhirat kamyab ho jaye. Allah humko aisa karne ki tawfiq de. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to do so. Amen. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. And said Allah, لا تتخذوا إلهين اثنين, do not take two gods, only He is God one. فإياي فارهبون, then me alone, then fear. And to Him belongs whatever is in the heavens and the earth, and to Him is all the religious commandments, wasiba, perpetual, permanent. Will then, besides Allah, will you fear? और कहा अल्लाह ने, ना तुम बना लेना दो माबूद, ना तुम ठहराना दो माबूद, सिर्फ वो है माबूद एक, बस मुझी से तुम डरो। और उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में और जमीन में, और उसी के लिए दीन के तमाम अहकामात हमेशा। फिर क्या अल्लाह के अलावा तुम अल्लाह के अलावा किसी और से तुम डरोगे या खौफ करोगे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला has made it very categorically clear कि माबूद एक ही है और वो मैं ही हूँ, वही तुम्हारा माबूद है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं। वो अकेला अल्लाह ही है जो पूरे कायनात को पैदा किया, जो आपको और मेरे को भी पैदा किया। वो हमारा रब्बुल आलमीन, उसी ने पूरे कायनात को पैदा किया और वही पूरी कायनात को चलाता है। He is the one who created this entire universe and he is the one who operates this entire universe, and he only takes unilateral decisions in all matters, and he is the one, the irresistible. And therefore we need to fear Allah alone, and whatever is in the heavens and the earth belongs to Him. And even all the religious commandments which Allah subhanahu wa ta'ala has decreed are all permanent. No change, no alteration whatsoever will ever happen. Allah ने जो दीन के अहकामात हम पर लाजिम किए हैं, ये हमेशा के लिए, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं, कोई तब्दीली नहीं आने वाली. And therefore our worship should be only to Allah, obedience should be only to Allah, and all our practices of our religion should be exclusively to please Allah. हमारी इताअत भी अल्लाह ही के लिए हो, इबादत भी अल्लाह ही के लिए हो, जो कुछ हम मांगे अल्लाह ही से मांगे, और तमाम अल्लाह ने जो दीन में अहकामात हम पर कुरान के जरिए भेजे हैं, इस पर पूरी तरह से जो है इखलास के साथ, यकसुई के साथ, पूरी संजीदगी के साथ इस पर अमल करें. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा किसी और से डरोगे, और तुम्हें डरने की जरूरत भी नहीं. अल्लाह ने जो है हमको ये बड़ी मुसीबत से नजात दिलाई कि हमने किसी के साथ खौफ करने की जरूरत नहीं. वाहिद अल्लाह है. Allah subhanahu wa ta'ala has brought us out of the shackles of superstitions and all kinds of problems and rituals which man has created on his own, and we are fearful of Allah and all, and we don't fear anybody else in the world, and we need not fear. And this is the benefit of strong iman. ईमान का तकाजा है कि हम किसी से ना खौफ करें, बल्कि सिर्फ अल्लाह का खौफ करें, उसी के बंदगी इख्तियार, उसी के गुलाम और बंदे बनकर जिंदगी गुजारें. We need to be a slave of Allah alone, not to slave to anything else. Neither the slave to our own desires or our wealth or the society or the world we are living in. No, we are slaves unto Allah. Our obedience belongs to Him alone. We worship Him alone. We supplicate to Him alone. We prostrate before Him alone. And everything that we want, we ask Him alone, and we pin all our hopes on Him and put entire trust on Him.
This is what is meant by the word Walauddin Wasiwa. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. फिर उसके बाद इन्हों क्या बोलेंगे, उन्हों क्या बोलेंगे, इन्हों क्या समझेंगे, उन्हों क्या समझेंगे, हमारे इज्जत का सवाल है. All this has no meaning and nothing in the dictionary of Islam. What will they think? What will they say? What will the society say? What about my respect? All this is trash, absolute trash. It is not found in the dictionary of Islam as a true believer. We only care what Allah subhanahu wa ta'ala would decide for us. Whatever Allah has decided and decreed, we will follow that. We will not bother with anybody. As long as my Lord is happy with me, I don't care for the world. I don't care for the world. As long as my Lord is happy. What will they think? What will so and so think? This is nothing but fear created by shaitan, and we become victims to it. Allah says, fear Allah. Fear Allah alone. Don't fear anybody else. If you do this, Allah will grant you respect, Allah will grant you dignity, Allah will grant you honor, Allah subhanahu wa ta'ala will give you success in this world and hereafter. Allah तुम्हें इज्जत से नवाजेगा, सच्ची इज्जत मिलेगी, बुलंदी अता फरमाएगा, ऊंचा मर्तबा अता फरमाएगा, तुम्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी का परवाना तुम्हें दे देगा. वमा बिकुम मिन निअमा, and whatever of the favors and whatever is with you of the favors, famin Allah, then it is from Allah. And whatever is with you of the favors, then it is from Allah. Then when massakumuddu afflicts you harm or calamity, failehi tajarun, then towards him you cry aloud. Then when he removes the harm from you, behold a group among you with the Lord, yushrikun, associate partners. Liyakfuru bima atainahum, that they may be ungrateful to what we have given them. Fatamattau, so enjoy. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, soon you shall know. और जो कुछ तुम्हारे पास है, कोई भी नियामत, ये अल्लाह की तरफ से है. फिर जब छूती है तुम्हें कोई तकलीफ, फिर उसी की तरफ तुम फरियाद रसी करते हो. फिर जब वो दूर कर देता है तुमसे वो मुसीबत, फिर एक ग्रोह तुम में से अपने रब के साथ औरों को शरीक ठहराते हैं ताकि वो नाशुक्री करे इस पर जो हमने दी उनको. बस मजे ले लो या मजे उड़ाओ, अनकरीब तुम्हें इसका अंजाम मालूम हो जाएगा. When problems come, everyone forgets all the false gods and they start worshipping Allah and supplicate to Him alone. सब दुनिया के पूरे माबूदों को भूल जाते, वाहिद अल्लाह को बुलाना शुरू कर देते. जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस तकलीफ से दूर कर देता है, फिर जाके मज़ारों में जो है फूल की चादरें उड़ाएंगे, फलाने पीर साहब को जो है शुक्रिया बोलेंगे, फलाने वाली को शुक्रिया बोलेंगे, अल्लाह को भूल जाएंगे उस वक्त. This is nothing but gross ingratitude. Allah says, enjoy life. You have been given this liberty to worship me and to worship others or to associate partners with me. You have the freedom. Go ahead, do what you want. But you know the consequences of this ingratitude very, very soon. If not in this world, surely in the hereafter. मजे उड़ा लो, जिसको चाहे तुम जो है शुक्रिया बोलो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गिरफ्त से बाहर नहीं हो. अल्लाह तुम्हें पकड़ेगा, तुम्हें अल्लाह के पास जवाबदेह ठहरेंगे और इस शिर्क की बिना पर अल्लाह तुम्हें जहन्नम को भेजेगा. अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन. वयजअलूना लिमा ला यअलमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम तल्लाहि लतुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून वयजअलूना लिल्लाहिल बनाति सुब्हानहू व लहुम मा यश्तहून. And they assign to what not they know. And they assign to what not they know. Nasibam mimma razaqnahum, a portion of what we have provided them. By Allah, surely you will be questioned about what you used to taftarun, fabricate lies. And they assign for Allah daughters, subhanahu, glory be to Him. Walahum ma yashtahun, and for them whatever they desire. और वो मुकर्रर करते हैं जो नहीं वो खुद जानते हैं, एक हिस्सा उसमें से जो हमने रिज़्क़ दिया उनको. अल्लाह की कसम, जरूर तुमसे सवाल किया जाएगा उसके बारे में जो तुम झूठ करते थे. और वो मुकर्रर करते हैं अल्लाह के लिए बेटियां, पाक है वो, और अपने लिए जो कुछ वो चाहे.
So these are all nothing but acts of shirk. माबूदों के लिए, फलाने वली के लिए, फलाने शेख के लिए, फलाने पीर के लिए एक हिस्सा। कुर्बानी भी जब करते हैं तो उनके नाम लेकर जो है कुर्बानी का, या अल्लाह का नाम लेते हैं, लेकिन नियत इनके लिए होती है। ये सब शिर्क। They assign partners with Allah and they set aside a portion of what Allah has provided them for their false gods. And they go one step further and they attribute daughters to Allah, na'uzubillah. As Allah Himself says that they make the angels, malaika, inasa. They treat the angels as Allah's daughters, na'uzubillah. Further Allah says, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. And when is given glad tidings to any of them of a female child, becomes his face muswadda, black or dark. Wahuwa kazim, and he is filled with inward grief. And he is filled with inward grief. Yatawara min al-khawm, he hides from the people of the evil what glad tidings was given to him. Ayumsikuhu alahun, will he keep it or will he retain it upon disgrace or bury it in the sand? Undoubtedly, sa'a ma yakumun, evil is what they judge. Sa'a ma yakumun, evil is what they judge. For those who do not believe in the hereafter are the descriptions evil, and for Allah only is the description highest. Wal Azizul Hakim, and He is the Almighty, All-Wise. और जब खुशखबरी दी जाती है उनमें से किसी को एक बेटी की हो जाता है उसका चेहरा सियाह और वो गम के घूंट पीता है या वो गम के साथ जो है वो जीता है। वो छुप छुप कर फिरता है लोगों से उस बुराई के बारे में जो खुशखबरी दी गई उसको। क्या वो उसको रखेगा जिल्लत के साथ या गाड़ देगा उसको मिट्टी में? कोई शक नहीं, बहुत बुरा है जो वो फैसला करते हैं। उन लोगों के लिए जो नहीं ईमान रखते आखिरत पर, उनकी मिसाल बहुत बुरी है, और अल्लाह के लिए मिसाल बहुत ही बुलंद, और वही खूब गालिब, खूब हिकमत वाला। In the days of ignorance, in the days of Jahiliyyah, during the time of the Prophet ﷺ, whenever a female child would be born, the father on some pretext would take her and bury her alive. This used to be the custom. They used to detest the birth of a female child. जब एक लड़की पैदा हो जाती तो फिर जो है माँ बाप दोनों गम के घूंट पीते हैं और बाप कोई बहाने से उस मासूम सी नन्ही बच्ची को ले जाता और जिंदा गोर दफन कर देता। वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Takwir, and when will be questioned the female infant child, for which crime was it killed? क़यामत के दिन अल्लाह उस मासूम बच्ची से पूछेगा किस गुनाह के बिना पर तुझे मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, which means Allah subhanahu wa ta'ala will hold those parents accountable for the death of that female infant child. Now it is done in a very sophisticated manner by aborting the female child inside the womb, which is called as female infanticide. You know that. आज इसका एक अलग रुख इख्तियार करते हैं कि माँ के पेट में ही जो है, जैसे मालूम होता है जेंडर बच्चे का, तो जो है उस बच्ची को माँ के पेट को ही खबर बना दिया जाता है। नौजुबिल्लाह। Islam came as a beacon of light and hope to humanity and gave that status to a female which was unheard of, unimaginable in any scriptures or in any religion for that matter.
Prophet ﷺ said, whoever has 3 daughters and would take care of their upbringing and gives due love and care to them and settles them in life, Allah's Prophet has said, such a father is guaranteed paradise. वो बाप जिसके यहाँ 3 लड़कियां हों और उनकी अच्छी परवरिश करता है, प्यार और मोहब्बत से उनको पालता है, बड़ा करता है और फिर उनको जो है जिंदगी में सेटल कर देता है, तो ऐसे बाप के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। यही तरीका है अगर कोई भाई है जो उसकी 3 छोटे बहनें हैं और उसका ख्याल रखता है, he also is given the same reward. One Sahabi asked the Prophet ﷺ, what if somebody had 2 daughters? Prophet said, even for them, for that father, same reward. Those narrators of this hadith say that if somebody would have asked at that point of time even 1 daughter, Prophet would have given the same answer. Whoever has daughters and sons, but do not create any disparity between the daughters and the son, but gives them equal love and treatment, and does not prefer the son over the daughter, but gives them equal love, even that father is guaranteed paradise. Umpteen number of hadiths in this. Umpteen number of hadiths. Daughters are a big gift of Allah. Big, big treasure and gift of Allah. And they have been given as an amana. Taking utmost care of the daughters, giving them good education, inculcating in them important moral and core values of Islam, is an investment for the future generation. क्योंकि माँ एक बच्चे के लिए मदरसा है. Mother is the university for a child. And based on how much the parents have invested their time in the right upbringing of the children, particularly the daughters, would be an investment for the future generations. आने वाली नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है. And if anybody has daughters, we should feel very proud and thank Allah and take due care of them. This is what the Prophet said. And Islam is the only religion that gives the status to the women. And Allah says those people who do not believe in the hereafter, their quality, their character, their behavior is disgusting. They are a liability on the earth on account of the sins and the crimes they commit, because they think there's nothing called accountability. So their qualities and their character are disgusting. On the contrary, Allah subhanahu wa ta'ala's qualities and attributes are the highest. The power that He exercises over the universe, the kind of control He has over every creation of His, and the way He disposes the affairs of this universe and all His creation is simply makes us dumbfounded. हम लाजवाब हो जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करिश्मे. ये जो अल्लाह का निज़ाम और अल्लाह किस तरीके से अपना निज़ाम को चलाता है, पूरे कायनात को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे वो फैसले लेता है और कैसी जो है पूरी कुदरत रखता है. हर शय को जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो देखता है, उसके इल्म में है. Every creation of Allah subhanahu wa ta'ala is closely monitored by Him to an extent that even a black ant under a black stone on a dark night is also observed by Allah, and Allah provides risk for it, and Allah takes care of it. What power! These are the verses which develop and reinforce our iman in our hearts. And we should be the first to prostrate before Him and thank Him for having given us this knowledge and right understanding of the powers of Allah. And there's much more to learn about it. We need to thank Him and thank Him and thank Him 1,000,000 times. Even that will not suffice for the kind of favors that Allah has bestowed on you and I by giving us this knowledge of the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us consistent. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to develop deep love for the Quran in our hearts, reinforce our iman in our hearts, and there should not be any limit of shirk in our lives. And we should be the first to surrender and submit even that liberty which Allah has given us to disobey before Him, for we wish to become true believers in the actual sense of the word. May Allah include us among them. Ameen.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Looking forward to seeing you tomorrow, inshallah. The rest of the verses, can you do your homework and be on time? Jazakallahu khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.